अभी यहाँ से करते हैं डर्कहाइम से, ठीक है। यहाँ से डर्कहाइम, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी. So Emile Durkheim was one of the pioneers of the discipline of sociology and was also founder and scholar of functionalist tradition. He is considered as the father of functionalist tradition, Emile Durkheim, along with Spencer and Comte. Before him, other scholars like Comte tried to lay the foundation of the discipline. किस बारे में बात हो रही है? फंक्शनलिस्ट डिसिप्लिन की बात हो रही है. But it was Durkheim who gave distinctive sociological explanations in the field of functional analysis for the first time. He was also the one who is credited to liberate the budding discipline from the mysterious methods and terminology of theology and philosophy. इससे डिटैच करवाने का भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है. He gave a macro view of society and according to him individual is subordinate to society and is also governed by it. Alright, so if you see here, कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं. जैसे एक तो इन्होंने ये डिटैच किया था. ही वॉज ऑल्सो द वन हु इज़ क्रेडिटेड टू लिबरेट द बर्डिंग डिसिप्लिन दैट इज़ सोशोलॉजी फ्रॉम द मिस्टीरियस मेथड्स ऑफ थियोलॉजी एज वेल एज फिलॉसफी. तो एक तो ये क्रेडिट दिया जाता है एमाइल डर्कहाइम को. दूसरा क्रेडिट मैक्रो विजन प्रदान किया था सोसाइटी को. एंड ये भी बताया था कि इंडिविजुअल जो होता है दैट इज़ सबऑर्डिनेट टू द सोसाइटी एंड इज़ ऑल्सो गवर्न्ड बाय इट. Society has a reality of its own over and above the individuals who comprise it, said the Durkheim. तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है सीधे सीधे कि कौन बोला था या ये इस प्रकार की आइडियोलॉजी किसकी है. तो सोसाइटी का दर्जा हमेशा इंडिविजुअल्स जो कि बनाते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं सोसाइटी के, बट इन द एंड द सोसाइटी टेक्स अ हायर रोल. ठीक है, इंडिविजुअल्स आर सबऑर्डिनेट टू सोसाइटी. नाउ Emile Durkheim's contribution to the formative discipline was immense and he is considered as the father of sociology for the following reasons. He tried to define the subject matter of sociology and attempted to develop a science of society in the form of sociology. तो इन्होंने एक तरह से एक scientific temperament ले आया था सब्जेक्ट में. He defined the subject matter as a study of social facts and suggested scientific methods for its study. For the first time he gave distinctively sociological explanations in his causal functional theories. For example, in his theory of suicide and theory of religion, he gave explanations which were distinctively sociological. ठीक है, तो ये इनकी जो ये बहुत फेमस थ्योरीज हैं, ठीक है, और इनमें इन्होंने causal functional theories समझाया है. He developed methods specific to sociology and also demonstrated its use in its theories. For his theory of suicide, he used methods to multivariate analysis. मेथड्स ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये कीवर्ड लिखना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम में. अपनी थ्योरीज़ में ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते थे. और दूसरा खासियत था कि मतलब उनकी जो एक्सप्लेनेशंस होती थी वो डिस्टिंक्टिवली बहुत ही एक्सक्लूसिवली सोशोलॉजिकल ही होती थी. किसी और सब्जेक्ट मैटर का सहारा लेके नहीं एक्सप्लेन करते थे. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप एंड वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी. इन्होंने पहला डिपार्टमेंट बनाया था यूरोप के किसी इंस्टीट्यूट में बनाया होगा. एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी. हिज मेथोडोलॉजी रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग ऑल हिज वर्क्स वेयर एट द आउटसेट ही प्रोवाइड्स अ फिटिंग इररेफ्यूटेबल डेफिनेशन ऑफ द फिनोमेनन. सेकेंडली ही रेफ्यूट्स एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशंस एंड फाइनली ही गिव्स अ डिस्टिंक्टिवली सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन फिनोमेनन. तो इनका थोड़ा सा तरीका अलग था. His methodology remains same during all his works, where at the outset he provides a fitting, irrefutable definition of the phenomenon. एक तो पहले ही ये एक बहुत ही अच्छी definition दे देते थे, कोई भी चीज़ जो explain करते थे, और उसकी पहली बहुत ही irrefutable definition दे देते थे. उसके बाद जो existing explanations होती थी उनको refute कर देते थे, और finally एक distinct sociological explanation दे देते थे अपनी ही definition का. ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छे से explain करते थे. सोशल फैक्ट्स थ्योरी क्या होती डर्कहाइम की. नाउ डर्कहाइम वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अप्रोच ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट्स एंड इंस्पायर्ड बाय दैट ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज. ही ऑल्सो सॉ डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल सोशल लॉज एज अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी. तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सैलिटी पे जाते थे. कुछ यूनिवर्सल सोशल लॉज की खोज करना चाहते थे विच कैन एक्ट एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी. He doled out the concept of social facts to lay a scientific foundation for the new discipline. और जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक scientific approach अपनाए थे ये. Social facts were visualized as akin to natural facts. His theory of social facts is significant because according to Susan Jones in her
What does Durkheim mean by thing? 1996, it was crucial in separating the new discipline from the philosophical discourse. To discover such universal laws, the first precondition was that there should exist some social facts in society, like natural facts in the natural world. According to him, just as behavior of matter in nature can be regarded as a reaction to natural stimuli, behavior of man can also be seen as a response to the external constraint of such social facts. तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है सूजन जोन्स, बिकॉज इन्होंने खास तौर पे इन्हीं के ऊपर ही किताब लिख दी थी, व्हाट डज डर्कहाइम मीन बाय थिंग. तो इस किताब में इन्होंने बताया कि इट वाज क्रूशल इन सेपरेटिंग द न्यू डिसिप्लिन फ्रॉम द फिलोसफिकल डिस्कोर्स. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिस्टीरियस और फिलोसफिकल डिस्कोर्स से ये सेपरेट किए थे सोशियोलॉजी को, इनका इसको क्रेडिट भी दिया जाता है. टू डिस्कवर सच यूनिवर्सल लॉज, और दूसरी चीज़ ये कुछ यूनिवर्सल सोशल लॉज की खोज में भी थे और खोज भी दिए थे, और उन्हीं में सॉल्यूशंस भी छिपा हुआ था कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी का. तो अब ऐसे यूनिवर्सल सोशल लॉज बनाने के लिए एक पहला फर्स्ट प्री कंडीशन वाज दैट देयर शुड एग्जिस्ट सम सोशल फैक्ट्स. कुछ रॉ यूनिवर्सल फैक्ट्स भी तो होने चाहिए, ठीक है. In society, just like there are some natural facts in the natural world, according to him, just as behavior of matter in nature can be regarded as a reaction to natural stimuli, behavior of man can also be seen as a response to external constraint of such social facts. So, in his major work titled Montesquieu and Rousseau, अब ये भी किताब इन्होंने लिखी थी, he laid down the general conditions for the establishment of a science of society. According to him, that is Emile Durkheim, a social science should deal with specific subject matter and not total knowledge that is around. बहुत ही specific subject matter होना चाहिए, and it should aim at identifying the general types rather than describing the individual types. It should have a definite and observable field to explore, and it should study objective reality. Objective reality को study करना चाहिए, and it should give general principles or laws and use methods similar to the natural science. Now, Durkheim further clarified the scope and methodology of sociology in his book, The Rules of Sociological Method 1895. According to him, task of a sociologist is to study social facts as things as we study things in the natural world. He defined social fact as social facts are the ways of acting, thinking, and feeling which are external to the individual and are endowed with the power of coercion by reason of which they control of him. फिर से पढ़ रहे हैं. Social facts are ways of acting, thinking, and feeling which are external to the individual and are endowed with the power of coercion by reason of which they control of him. ठीक है, समझ रहे हैं. He considers social facts as those phenomena which exist outside the individual, which exist as a force which coerce the individual to think, act, and feel in a particular manner. Then such a thing can be called as a social fact. The task of sociology is to identify and study such social phenomena or social facts. ये बहुत ही minute और क्लिष्ट definition है, हम clear कर दे रहे हैं. Social facts को कैसे define किया था? These are the ways of acting, thinking, and feeling, ठीक है, which are external to the individual. मतलब acting, thinking, and feeling under a specific stimuli, right? तो a person acts, feels, or thinks a certain way by the power of coercion, right? By the power of coercion, by the reason of which they control the acting, feeling, or thinking of an individual. तो such external stimuli वगैरह के influence में एक individual कैसे act, feel या think करता है, so then that becomes a social fact. The task of sociology is to identify such social facts. Now, social facts thus can be understood by four characteristics: externality. Social facts exist outside the individual and must be seen apart from the individual. These are called sui generis, coming into existence on their own as part of the autonomous development of society. So, social facts, they come into existence on their own as part of the development of society, and they exist outside the individual and must be seen apart from the individual. Sui generis. Then constraining. The social facts exercise constraining influence over the individual action. The constraint is in nature of coercion.
The existence of constraints makes social facts as real as constraint is visible in terms of its consequences. Then generality. Social facts are general in nature and must not be confused with the individual interpretations or individual facts. These are in the form of generalized perception, which is understood by all the individuals in the same manner. So, these are in the form of generalized perception, which are understood by all the individuals in the same manner. Durkheim rejects the study of exceptions and focuses upon identification of general types. For example, he studies religion as a general type and does not study any particular religion. ठीक है, तो एक्सटर्नैलिटी होनी चाहिए, मतलब sui generis. एक्सटर्नैलिटी मतलब sui generis. That means social facts exist outside the individual and must be seen apart from the individual. Secondly, they come into existence, such externality come into existence as the society develops, and they have an effect on the individual. Then वो जो effect होता है वो constraining होना चाहिए. The social facts exercise constraining influence over the individual action, and the existence of constraints makes social facts real. फिर generality होनी चाहिए, that is अब तुम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर कोई अगर अबव टू थिंग्स अगर हम अप्लाई करें तो उस रिलीजन में क्या डेवलपमेंट होगा, तो तुम्हें ये स्टडी करना होगा कि अगर सारे रिलीजन पे कोई पर्टिकुलर इफ़ेक्ट किया जाए तो फिर सारे रिलीजन में एक कॉमन रिएक्शन क्या आएगा. सो दैट बिकम्स जनरलिटी, जनरल रिएक्शन. तो जनरलाइज्ड परसेप्शन विच इज़ अंडरस्टूड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स. तो ये हो गया. और चौथा हो गया इंडिपेंडेंस. दैट इज सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल्स कैनॉट चेंज द सोशल फैक्ट्स बट रादर द ऑपोजिट इज ट्रू. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल्स कैनॉट चेंज द सोशल फैक्ट्स बट रादर ऑपोजिट इज ट्रू. दैट इज सोशल फैक्ट्स कैन चेंज द इंडिविजुअल. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट्स की. राइट, नाउ वी आर टेकिंग अ ब्रेक. सो वी वर हियर. ओके, तो मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी social facts की. Now, thus Durkheim kept social facts above individual. Durkheim kept social facts above individual. According to him, social facts are not abstract phenomena. They can be visualized as objective reality. And दूसरी चीज़, social facts were not abstract. They can be visualized as objective reality. Durkheim considered that social facts are difficult to study as they seem intangible and hence cannot be observed directly. तो social facts क्या होते हैं? इंटेंजिबल तो होते हैं बट एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. दे कैन स्टिल बी विजुअलाइज्ड एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी बट स्टिल दे आर इंटेंजिबल. नाउ डर्कहाइम डिफरेंशिएटेड बिटवीन 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. अब एक होता है मटीरियल एंड दूसरा होता है नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट. ऑल्दो ही डेल्ट विद बोथ इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क, हिज मेन फोकस वॉज ऑन नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स. नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कल्चर, social institutions, morality, collective conscience, and social currents, rather than material social facts, for example, styles of architecture, forms of technology, division of labor, and legal codes. So he was more inclined in studying the non-material social facts, that is culture, morality, collective conscience, social trends, etc. He concluded that earlier societies were held together primarily by non-material social facts. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको I will mark that with a different color. So Durkheim concluded that earlier societies were held together primarily by non-material social facts, specifically a strongly held common morality, or what he called a strong collective conscience. He saw social facts along a continuum of materiality. The sociologist usually begins a study by focusing on material social facts, which are empirically accessible, in order to understand non-material social facts, which are abstract in nature and hence difficult to grasp and can be studied only indirectly with the help of material social facts. So Durkheim goes on to say that, however, he laid more emphasis on the non-material social facts, but then he goes on to explain that it's not easy to study the non-material social facts. ठीक है? Why? Because in order to understand non-material social facts, which are abstract in nature and difficult to grasp, they can be studied only indirectly with the help of material social facts. ठीक है? तो ये है. Now, to make the study of social facts easier, Durkheim suggested that social facts should be studied in terms of their effects or consequences in society. दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि social facts should be studied in the form of cause and effect.
in society. While doing so, scientific approach should be adopted and the researcher should be objective in his approach without any bias or ideology. Now, there are two ways which can explain social facts: determining cause of social facts and determining functions of social facts. According to, अब ये cause अगर हम देखें, determining the cause of social facts, according to him, cause of a social fact lies in another social fact. For example, cause of suicide does not lie in the individual's will, but should be explored through various other social facts like population, integration in social order. ठीक है? So he says that cause of one social fact lies in another social fact. ठीक है? Then दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि determining functions of social facts. According to him, social facts perform certain functional prerequisites of society. Most important, which is maintenance of social order. According to him, collective conscience is that social fact that maintains social order. It has a constraining effect on individuals and it affects their actions. Thus, society manifests itself in individual activities. तो दूसरा चीज़ बोला कि मतलब एक तो उन्होंने कहा कि सोशल फैक्ट, कोई एक पर्टिकुलर सोशल फैक्ट है, ठीक है, तो उसका एक जो कॉज होता है ऑफ वन सोशल फैक्ट दैट लाइज इन another social fact that lies in another social fact such as suicide, right? तो it is very common to say that ये individual का किया जा रहा है, जबकि explore ये करना चाहिए कि what are the other social facts that pushed a person to take such a step. ठीक है? So that will be the first step या first approach how Durkheim would think. दूसरा चीज़ है कि हर social fact का कॉज तो होता है जो कि एक अनदर सोशल फैक्ट होता है. सिमिलरली हर सोशल फैक्ट का एक फंक्शन भी होता है. जैसे कलेक्टिव कॉन्शियंस एक सोशल फैक्ट है एंड इट इज़ दैट सोशल फैक्ट दैट मेंटेन्स द सोशल ऑर्डर. तो इसका फंक्शन क्या हुआ? सोसाइटी में ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है कलेक्टिव कॉन्शियंस. टू विजुअलाइज दैम एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही सजेस्टेड सर्टेन रूल्स ऑफ स्टडीइंग द सोशल फैक्ट्स which were explained in his The Rules of Sociological Method in 1895 as part of Durkheim's bid to establish a distinct methodology in sociology. तो इन्होंने रूल्स ऑफ स्टडिंग सोशल फैक्ट्स निकाले थे कुछ, ठीक है? वो क्या क्या होते हैं? तो रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन. Social facts should be studied as things. Observing social facts as things will help us to view them as definite reality rather than an abstract phenomenon. Although these may seem to be abstract, every social fact has some representation which exists in the form of objective manifestation of the social facts. It is through these manifestations that social facts can be observed as things. Durkheim called representations as collective representations in the form of different types of symbols which denote different types of social facts. तो इन्होंने कहा कि the social facts should be studied as things and observing social facts as things will help us to view them as definite reality rather than an abstract phenomenon. दूसरी चीज़ है रूल ऑफ क्लासिफिकेशन. Durkheim says that every social fact is not unique but is a part of broad classification. Different types of social facts can be identified as structural or morphological facts, institutional social facts and non-institutional social facts. तो तीन हो गए ना. अब Durkheim says that every social fact is not unique. ठीक है? Every social fact is not unique but it is a part of a broader classification. जैसे morphological social fact क्या होते हैं? These are the facts which give a particular society its appearance. फिर institutional social facts क्या होते हैं? These are the facts which are institutionalized and accepted by the people. ठीक है? Institutionalized and accepted by the people as an institutional social fact. जैसे कि religion हो गया, ठीक है? Division of labor हो गया. An institutional social fact which is accepted by people. फिर कुछ non-institutional social facts होते हैं. These are the facts which are still not accepted by the people but have a potential of exerting constraints on individuals. For example, mob behavior and crowd behavior. So they are not accepted by the people, right? But they have a potential of exerting constraints on individuals. They are also termed as socio-currents. तो हम ये कर रहे थे. रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, देन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स देखे और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट देखे, ठीक है? तो रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, एंड देन कम्स rules of distinction. So while studying social facts, a distinction must be made between normal and pathological state. Social facts remain in general in normal state, but sometimes in certain situations they also display pathological characteristics.
Social facts are considered normal when they are present in their general form and fulfill some functions of the society. They may also become dysfunctional in their pathological state. For example, certain rate of crime is considered normal. When it increases beyond a certain level, it morphs into pathological state and prove dysfunctional for the society. Alright, तो रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ सोशल फैक्ट्स अ डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेड बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट. जैसे कि some social facts are considered normal when they are present in their general form and fulfill some functions for the society which may be healthy. Then लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो डिसफंक्शनल हो जाएगी, केओस हो जाएगा. अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, certain rate of crime is considered normal. When it increases beyond a certain level, it morphs into pathological state and proves dysfunctional for the society. ठीक है, हालांकि एक और अच्छा एग्जांपल दे सकते थे. फिर एक लास्ट में होता है रूल ऑफ एक्सप्लेनेशन. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सोशल फैक्ट्स, डर्कहाइम प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन रूल्स लाइक द इन्वेस्टिगेटर शुड ऑब्जर्व कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी and personal preoccupations and biases should not be eradicated while studying the social facts. Should be eradicated. ठीक है, अब मतलब तुम्हारा भी तो कुछ सोशल इंक्लिनेशन हो सकता है, तो द इन्वेस्टिगेटर शुड ऑब्जर्व कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी एंड पर्सनल प्रीऑक्यूपेशंस एंड बायसेस के इन्फ्लुएंस में आके सोशल फैक्ट्स को स्टडी नहीं कर सकते. Then methods used by the natural sciences should be used to study social facts as well. He himself demonstrated the use of methods like concomitant variations, indirect experimentation, and statistical techniques in various explanations. His theory of society is a classical exhibition of use of quantitative methods in sociology. तो ये वाली जो थ्योरी है, इसमें तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया है सोशियोलॉजी में. सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन वाज आल्सो यूज्ड इन हिज थ्योरी ऑफ रिलीजन, और इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन का टेक्निक इस्तेमाल किया है थ्योरी ऑफ रिलीजन में. तो दैट्स हाउ साइंटिफिक ही मेड द डिसिप्लिन. एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स मस्ट ईल्ड जनरल थ्योरीज. फाइनली सब कुछ पढ़ने वढ़ने के बाद एक जेनरिक थ्योरी निकल के आनी चाहिए. डर्कहाइम प्रपोज्ड फॉर्मुलेशन ऑफ कॉजल फंक्शन थ्योरी, मतलब वही कॉज, और हमने बताया ना कि एक सोशल फैक्ट का कॉज एक दूसरे सोशल फैक्ट में होता है, और दूसरी चीज़ की एक सोशल फैक्ट का कुछ फंक्शन भी होता है. जैसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक सोशल फैक्ट है, और इसका फंक्शन क्या है सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इट मेंटेन्स अ सोशल ऑर्डर. तो ये कॉजल फंक्शनल थ्योरी के को प्राथमिकता देते थे, एम्फेसाइजिंग ऑन सेपरेशन ऑफ कॉज एंड फंक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलेजिटिमेट टेलियोलॉजीज. तो इन्होंने कहा कि बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कॉज क्या है एंड फंक्शन क्या है, in order to prevent illegitimate teleologies. ठीक है. However, his theory and method of social facts didn't truly measure up to the claim of being scientific. It came under several criticisms. अब ये डर्कहाइम के जो criticisms हैं वो हम अगले में देखते हैं.